Welcome back. This is lecture 4 of marginal costing and applicable for cost and management accounting of group 2 as well as cost accounting of group 1 paper 8. Okay. This is for CMA intermediate June 2022 attempt. ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 4 है. आपका ग्रुप 2 और ग्रुप 1 के दोनों कॉस्ट अकाउंटिंग को एड्रेस करेगा. ओके. For group 2 there are some additional topics also like transfer pricing वगैरह है, वो हम separately करेंगे group 2 के लिए. Okay, this is some common part of techniques of costing. ठीक है, जिसमें marginal, standard और budgetary control होता है. ठीक है, there will be some common batches for these where the topics are common. ठीक है, और बाद में हम batch को split कर देंगे. Okay, right. So yes, so we started with marginal cost statement. Okay, so we have seen that the technique of presentation is different. Okay, in marginal costing, the way costs are presented, it is different. Okay, that is the major difference. How we present it is, you start with sales. Okay, and then you deduct only the variable cost of sales. So variable costs are those costs which are directly proportional to units. Okay, so as many units you will sell, the variable cost will increase in direct proportions. Okay, and so the difference between the two gives you contribution. It gives you a fund called contribution. From contribution, if you deduct your fixed cost, which is your period cost, okay, if you deduct the fixed cost which remains constant for a period, okay, it's also called period cost. Once you deduct that, you will get profit or loss. Okay, so so basically this is how marginal costing functions. Okay, this is the main statement by which marginal analysis is done. Okay, so then in the tools and techniques of costing, we saw some major terms. One was contribution, which I have already showed you. Okay, then we talked about key factor or limiting factor. Okay, it will be any factor of production which will limit your output. Okay, so here contribution per unit of key factor is found out wherever key factor is in operation. Okay, and then ठीक है, तो सबको समझ में है. हमने कंट्रीब्यूशन की बात की थी. ये आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, और हमने की फैक्टर को डिस्कस किया था. ओके, जिसको लिमिटिंग फैक्टर, की फैक्टर, प्रिंसिपल बजट फैक्टर, ये सब भी बोला जाता है. ठीक है, राइट. जब की फैक्टर ऑपरेशन में हो तब हम क्या फाइंड आउट करते हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर. ओके, और जिस ऑप्शन का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर हाईएस्ट हो, the contribution per unit of key factor, wherever it is the highest for whichever option, we go with that option. Okay, next thing which we discussed is profit volume ratio. Okay, so profit volume ratio is calculated as contribution upon sales into 100. You calculate it for per unit or total, you will get the same value. Okay, then we also saw some additional way to calculate it, that you can calculate it by change in contribution upon change in sales into 100. ठीक है, change in contribution upon change in sales into 100. Okay, similarly directly if you have the profit figure, you can just do change in profit upon change in sales into 100, still you will get the contribution figure. Okay, and I had demonstrated these two to you with a dummy marginal cost statement. ठीक है, हमारा एक model problem है, which we had created a model problem, right, of a tailor. So based on that I had demonstrated this to you, so you can see your previous lecture. So okay, you will get a fair idea of it. So this is your profit volume ratio. It's expressed generally in percentage. Okay, and then
Okay, there's one more thing I'll have to tell you, that is what is variable cost ratio. So variable cost ratio is complementary of profit volume ratio. So in this statement, okay, your variable cost ratio is 20/50. Okay, whereas your profit volume ratio is 30/50. Okay, these two are complementary ratios. Okay, so total will always be equal to either 1 in units, in decimals, or 100 in percentages. Okay, they are called as complementary ratios. Okay, so that is variable cost ratio. Then we had discussed about break even point. This is that point where the business will have neither profit nor loss. Okay, it is called break even point. Okay, so here we had seen some formulae for that. I also demonstrated to you how the formula would have been derived. Okay, so in value, BEP is equals to fixed cost upon PV ratio. In units, it is fixed cost upon contribution per unit. Okay, and then now break even analysis is this analysis, what we do with marginal cost statement. We also call it cost volume profit analysis, break even analysis, and profit graphs. Graphs are something where the same relation which is depicted in your profit volume statement, in your marginal cost statement, okay, that is depicted in a chart. I'll be showing you some charts also today. So charts are not very important, but it's very easy because for all the charts, the same logic is used. So if you get any problem of chart, it will be a very, very basic construction. Okay. So I'll show you the charts today and we'll revise it once also. That will be sufficient for you. Okay. You won't forget it because it only talks about 2-3 things in all the charts. ठीक है, so charts भी हम देखेंगे कि कैसे बनाए जाते हैं. तो cost volume profit analysis, CVP एनालिसिस बोलते हैं इसको शॉर्ट में, CVP. ठीक है, अब बोलता है कॉस्ट. ठीक है, वॉल्यूम यानी सेल्स वॉल्यूम, एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ सेल्स. कॉस्ट और वॉल्यूम और प्रॉफिट, ये दिनों का इंटरेक्शन, नथिंग बट योर ब्रेक इवन एनालिसिस. दिस इज योर ब्रेक इवन एनालिसिस. और एक नाम है हमारा प्रॉफिट ग्राफ्स भी, बताता यही है बट चार्ट फॉर्म में. ओके, सो ये दीज आर ऑल बेसिकली इंटरचेंजेबल वर्ड्स. ओके, so also now your break even point can be determined by 2 methods mainly. Algebraic method है, इस contribution margin approaches जो हमने ऊपर देखा है, the statement S minus V is equals to C minus F is equals to profit. That is your marginal cost statement contribution approach. Next is equation technique, which is similar to your marginal cost approach. ठीक है, उसी के कुछ equations हम बना लेते हैं based on the same relation and you use that. So these two basically are based on the same parent relation. The contribution margin approach is also an equation in vertical form, correct? ये भी एक equation ही है. So these are called as algebraic methods. दूसरा है graphical representation, which I told you. यहाँ पे profit graphs जो हम बोल रहे थे, right? So there are 2 types of chart, break even charts and profit volume charts. इसका भी I'll show you an introduction. तो एक काम करते हैं, let's just see, ये देख लेते हैं कि how the charts look. एक basics of charts बताता हूँ आपको. Okay, there's nothing to really worry about. Charts जो है ना, this is the easiest part. देखने में ऐसा लगता है कि ओके अरे ये क्या है, but it is the easiest thing. ठीक है, इसीलिए I'll just tell you इसके main points क्या होते हैं, main things. Okay, so always remember, these are all break even charts. ठीक है, all units जो है आपके x axis में होते हैं, all units. ठीक है, unit 1 2 3 x axis में आपको डालना है. ठीक है, और यहाँ पे जो है रुपीज रहेंगे. what will come here in the y axis is rupees. Okay, and in x axis
units. ठीक है, now rupees में of course your cost, revenue, everything will be in rupee only, so cost and revenue will get covered in the y axis. ठीक है, all rupees will come here. Always remember units here and rupees on y axis. ठीक है, all charts का plotting similar है, एक खादा different है, that I'll tell you, but mostly it is plotted in this way, so just remember this part. So now how you draw it is the main thing. I'll tell you. First, say in green, I'm showing you the total cost line. You can see here, this is your total cost line. You can see it is starting from a point here. Okay, this is your fixed cost. So when you sell your first unit, okay, you would need to spend your fixed cost. Okay, only after that you can sell your first unit. So even for the first unit, this much cost, the fixed cost is already borne. इसीलिए total cost line starts at the fixed cost point. ठीक है, तो जो total cost line है हमारा, चलिए इसको निकाल देता हूँ. देखिए ये चालू हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. देखिए, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, क्योंकि वंस यू इवन प्रोड्यूस योर फर्स्ट यूनिट, आपको फिक्स्ड कॉस्ट का पैसा तो आपका गया, राइट. तो इसीलिए यहाँ से चालू होता है, इसके ऊपर ही आपका हर वेरिएबल कॉस्ट जितना रहेगा, एवरी वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम ईयर विल बी अकाउंटेड फॉर अबव दिस. ये सारे वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे ले लिया हमने. This is how you are getting the total cost line. Okay, understood? Now I'll show you the total sales line. Now this will start from zero. Okay, because before you make the first sales, what is your income? Zero. Then you will have the first unit income. Okay, so this is your total sales line. Okay, and this angle, now this angle which is created by the intersection of the two, देखिए, this is यहाँ पे, here and here. Okay, this angle has been created by the intersection, correct? This is called angle of incidence. इसको बोलते हैं angle of incidence. So when you increase your per unit cost, होता ये है, increase your per unit cost, then your this sales line ना, ये थोड़ा सा ऐसा बढ़ जाता है, little bit. So in the end, what happens is your this angle of incidence, it increases. Okay, so because now, so if you see the new intersection point, okay, I'm showing in red now. This is the sales, and here is the cost line. So this becomes the new intersection point. So it increases. Okay. Again, so angle of incidence increases with the if the per unit selling price is increased, okay, or per unit cost is reduced. It doesn't increase when more units are sold. Kyun? Because when more units are sold, what will happen? More units are sold, this line will go on increasing, same line will go on increasing, and the same line will go on increasing if more units are sold. So the angle doesn't change, right? Angle remains the same line is increasing. इसीलिए वो change नहीं होता है. Okay, understood? And this is your fixed cost line here. ये आपका fixed cost line. Okay, so these are the basic things of your break-even chart. इस तरह से it is constructed. Now, इसका ही एक दो variants I'll show you now. Okay, so now this one, if there is increase in number of units, which I already showed you, right? Dotted line में मैंने आपको बताया था, there I had shown you, right? Increase होगा तो same line will increase, right? So there will be no change in angle of incidence. Understood? ठीक है, same line is going to increase with increase. यहाँ पे भी same line यहाँ तक था, now it is going to increase further with increase in units sold. ठीक है, but the angle doesn't change. ठीक है, हमको रे तो हमको मालूम है, एंगल तो हमने सीखा ही होगा. ठीक है, एंगल आप कितना भी बढ़ाते जाओ, वो एंगल चेंज नहीं होता, राइट? सो
which is why in increase in number of units से आपका या decrease in number of units से your angle of incidence doesn't change. This is one thing. Okay, वो ये डिपेक्ट करता है. And then this is second one is increase in sales due to increase in selling price. ये भी मैंने आपको बताया first वाले से, correct? NTS is new total sales line. So if your per unit is increased, then आपका क्या होगा? ये line थोड़ा यहाँ से आएगा. It will come little bit above your current line. जैसे मैंने आपको बताया था, from here is the intersection point now. This is the sales line and this is the cost line. ठीक है? That's why it increases. ठीक है? अब ये चलो नेक्स्ट इज इंक्रीज इन डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, ऑल दिस इसको मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा. ओके, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट टुगेदर. ओके, इट इज ऑल द सेम लॉजिक. आपका एक ही पैरेंट डायग्राम है, उसी में से वी कैन वर्क आउट ऑल दिस. ठीक है, तो इसको मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा. इट्स अ स्मॉल टॉपिक. ओके, तो बड़ा टॉपिक नहीं है, बिकॉज चार्ट्स यूज्ड एज लिटिल बिट स्पेस इज कंज्यूम्ड, दैट्स ऑल. ओके, ठीक है. ये पार्ट आई विल कंटिन्यू लेटर. ओके, जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा आई विल अगेन शो यू व्हाट आई हैव ऑलरेडी शोन, तो थोड़ा और अच्छे से समझ जाएगा आपको. फिर विल कंटिन्यू आल्सो. ओके, so now I'm going back. Okay, so this was your graphic presentation. Just I gave an introduction to you. चलो, so this is where we were supposed to continue. ठीक है, और हमने थोड़ा सा चार्ट्स वार्ट्स भी देख लिया. ओके, so let's see this problem now. Product is sold at a price of 120 per unit. Price of 120 per unit. ठीक है, SP is 120 per unit, वेरिएबल कॉस्ट इज 80 पर यूनिट. ठीक है, तो यहीं पे हमको दिख रहा है कंट्रीब्यूशन इज 40. ठीक है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस F है 8000. अब वो बोल रहा है फाइंड बीईपी इन रुपीज एंड यूनिट्स, प्रॉफिट मेड व्हेन सेल्स आर 240. 240 यूनिट्स के लिए यू हैव टू शो द प्रॉफिट. देन सेल्स टू बी मेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5000. तो ये जो पॉइंट 2 है, इसको ये भी बोलते हैं प्रॉफिट एट डिजायर्ड सेल्स, और ये पॉइंट जो है इसको बोलते हैं सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट. ठीक है, इन शॉर्ट ये दोनों का एक्चुअली व्हाट दे आर कॉल्ड एज इज प्रॉफिट एट डिजायर्ड सेल्स, सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट, ये दोनों कहा जाता है. ओके, तो चलिए करें फिर ये प्रॉब्लम. ओके, सो बीईपी का क्या फॉर्मूला है, मैंने आपको पहले बताया था. बीईपी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन पीवी रेशियो. ओके, दिस इज इन रुपीज, और इन यूनिट्स इज एफ अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ये फॉर्मूला धीरे धीरे आपको भी याद होने लग जाएंगे व्हेन वी डू मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स. ठीक है, ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर बीईपी. तो चलो अपन देखते हैं यहाँ पे. दिस इज आवर सॉल्यूशन में मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाया यूनिट. फर्स्ट वी हैव स्टार्टेड विद पर यूनिट स्टेटमेंट. ठीक है, ये इसमें ये डाल दिया हमने 120 and 80. यू कैन सी द कंट्रीब्यूशन. अब ये है 1 इज व्हाट वी आर डूइंग, बीईपी इन रुपीज एंड यूनिट्स. ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम करते हैं, क्या चाहिए हमको, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. तो सबसे पहले इसका पीवी रेशियो निकालते हैं. पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100. ठीक है, ओके. फर्स्ट स्टार्टिंग विद पीवी रेशियो. पीवी रेशियो इज व्हाट, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100. इन पर यूनिट आल्सो यू कैन टेक आउट. सो बेसिकली कैन आई से 40 upon 120 into 100, right? 40 upon 120 into 100. So वो करने से I'll get
Okay, 33.3%. Okay, 33.33% is what this is your PV ratio. Okay, and so BEP is equals to F upon PV ratio. Fixed cost is already given here. Fixed cost is 8,000. Okay, here, yeah, ठीक है, 8,000. So चलिए, तो अभी क्या करेंगे हम, इसको for use in calculation, because I multiplied in 100, right? For use in calculation, we have to use only the ratio 40/20. ठीक है, या आप कैलकुलेटर में if you do 40/20 and press the no, when you press the percentage button, it will give you in percentage. ठीक है, so यहाँ पे is equals to 40/20 यानी 0.33 हम यूज करेंगे रेशियोज में. ठीक है, फॉर कंप्यूटेशंस. ठीक है, तो आप जो कैलकुलेटर में करते हो जो परसेंट आता है ना, दैट यू कैन डायरेक्टली यूज इन योर कैलकुलेशंस. ठीक है, यहाँ पे जस्ट एक फॉर्मेट होता है. इफ आई जस्ट डू फॉर्मेट, इफ आई फॉर्मेट इट एज परसेंटेज एक्सेल. ओके, आई जस्ट फॉर्मेटेड इट एज परसेंटेज नाउ. ठीक है, 33. नाउ आई कैन यूज इट डायरेक्टली. ठीक है, तो ऐसे फॉर्मेट में आपको यू गेट द आंसर इन कैलकुलेटर. ओके, सो चलो, ओके फाइन. सो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है हमारा, चलो 8,000 अपॉन 33.33%. ये हमारा है ब्रेक इवन पॉइंट, विच इज नथिंग बट दिस इज योर बीईपी, विच मीन्स ब्रेक इवन सेल्स. ये सेल्स को हम अब डाल सकते हैं यहाँ पे. जस्ट पुट इट हियर. ये आपका सेल्स आ गया 24. ठीक है, 24,000 इज योर सेल्स. नाउ आपके पास ऑलरेडी पीवी रेशियो है. ये सेल्स को नाउ मल्टीप्लाई विद 33.33, यू विल गेट 8,000. चेक कर लो, मल्टीप्लाई 24,000 विद 33.33%, यू विल गेट 8,000. ओके, इसलिए सेल्स से पीवी रेशियो, यू विल डायरेक्ट गेट कंट्रीब्यूशन विदाउट वेरिएबल कॉस्ट. यू डोंट इवन नीड वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्टली विल गेट कंट्रीब्यूशन. ओके, तब ये 8,000 हो गया. अब ये 8,000 हो गया, तो अब आपका फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, 8,000 ऑलरेडी है, तो प्रॉफिट आ जाता है 0. दैट मींस इट इज ब्रेक इवन पॉइंट, यानी ये सेल्स करेक्ट है हमारा, करेक्ट, तभी हमारा प्रॉफिट 0 हो. ओके, समझ गया ये पॉइंट सबको. तो सेकंड वाला क्या बोलता है, दिस वन, प्रॉफिट्स मेड व्हेन सेल्स आर 240 यूनिट्स. तो चलो सीधा सीधा है. Please put yourself on mute. म्यूट कर लें सब अपने आप को. ओके, सो हियर हमने सेकेंड पॉइंट में क्या बोला, मैंने क्या करना है, प्रॉफिट्स मेड व्हेन सेल्स आर 240 यूनिट्स. 240 यूनिट्स दिया है, तो जस्ट आपको सेल्स पर यूनिट लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 240. ओके, देन यू विल गेट दिस सेल्स. हाउ डिड आई गेट 28,800? I took 120 and multiplied by 240 units. So I got 28,800 here. Okay. Now do 28,800 into PV ratio 33.33. ठीक है, तब आपको ये मिल जाएगा 9,600. फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी है आपके पास. दिस माइनस दिस कितना हो जाता है, आपको मिल जाता है 1,600. So answer is to profit made when sales are 240 units is 1,600. ओके, ठीक है. सो चलिए, ये दो हो गया. थर्ड वाले में लेट्स सी सेल्स मेड टू अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 5,000. सेल्स टू बी मेड, कितना सेल्स करना है. ओके, नेट प्रॉफिट ऑफ 5,000. अब आपको नेट प्रॉफिट ऑफ 5,000 कब मिलेगा. ठीक है, यू नीड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 5,000 और यू नो ये 800 है, फिक्स्ड कॉस्ट इज 8,000.
ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट इज 8000. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इफ आई ऐड डिजायर्ड प्रॉफिट, so if I get fixed cost plus desired profit, okay, so this will be my desired contribution. So my desired contribution is fixed cost plus desired profit. अगर मैं ऐसा करता हूं, यानी so first I am targeting क्या contribution मुझे लेना है to get a profit of 5000. ठीक है, now direct relation with profit is with contribution ना, then contribution का relation is with sales. इसलिए हम इसका पहले देख रहे हैं. First we are going one step up. So अगर ये fixed cost plus desired profit में fixed cost आपका 8000 है, आपका what is your desired profit 5000. So 8000 plus 5000 gives you 13000. तो 13 में से 8 माइनस हो जाएगा, then you will get 5000. ठीक है, यहाँ मुझे ये मिल गया, फर्स्ट स्टेप ये मिल गया कि दिस इज 13000. ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट इज 13000. नाउ अगर मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ गया है, so you know that sales into PV ratio is equals to contribution, correct? तो सेल्स क्या रहेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो. ओके, ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, we have PV ratio also, we have contribution 13000 also. So 13000 upon PV ratio करेंगे तो you will get sales. So just do here, this is your, now at this stage this is your desired contribution. ठीक है, 13000 upon PV ratio. If you do this, you will get your sales to be made. अब आपको if you want to test it, अब ये आ गया 39000 now. ठीक है, you want to test it, 39000 into PV ratio कीजिए, you will get contribution. इसमें से 8000 माइनस होगा तो you will get profit. Okay, that means it is correct. In case 1, okay, here no. So see, you have got two formulae for break even point. One is break even point in units. ये जो formula है, this is break even point in amount. ठीक है, break even point in amount or value, let me say. Okay, amount या value. And this is BEP in units. Second formula जो है ना, is BEP in units. So this you can find out by fixed cost upon contribution per unit. Fixed cost upon contribution per unit. So इसके लिए कैसे क्या करेंगे, fixed cost is 8000. So 8000 upon contribution per unit is 40. So it is 200. So 200 is your break even point in units. ठीक है, so हमने यहाँ पे units में नहीं निकाले थे पहले, right? Only BEP इसमें निकाले थे. So units आप ऐसे निकालेंगे. Okay, so you just have to do fixed cost upon contribution per unit. Okay, these are the two formulae for break even point. Okay, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है. सो इफ यू सी सम वर्किंग्स यहाँ पे वही है, ये मैंने बताया आपको, ऑल दैट. जस्ट ऑलवेज ये बात याद रखना है कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट आपको करना पड़ेगा. ओके, व्हेन यू नीड टू फाइंड सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट. ठीक है, तो आपको फर्स्ट यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू इज स्टेप बाय स्टेप जाने. दीज आर एक्चुअली टू इक्वेशंस, राइट? S minus B is equals to C एक equation है, C minus F is equals to F. Yes, another equation, right? There are two equations here. So which is why when you have this, okay, add this to your fixed cost. This is your desired profit, then you will get desired contribution. Once you have desired contribution, okay, just divide this desired contribution by PV ratio. Okay, you will get desired sales. Okay, this is how you do the next one, right?
Okay. So move ahead. ठीक है ना. Angle of incidence तो मैंने आपको I showed it along with the diagram, right? That the break-even charts. So the intersection point between total sales and total cost line is called angle of incidence. Okay. Higher the angle, higher is the rate of growth. Okay. इतना ही उसका relevance. But angle of incidence is a very important concept. Okay. They asked it a lot because many students do not know. These are among those things that everyone doesn't know. Okay. So be careful about that. Okay. So angle of incidence, you should know the concept of that. So it's very small concept, but yes, you have to know that. Okay. The uses and applications of break-even analysis, I'll tell you. Some theories also we had left, right? जो बाद में करेंगे करके. We'll do that also. तो इसमें देखिए for break-even analysis की uses है for forecasting costs and profit as a result of change in volume, right? That's what we did here. Fixation of sale volume to earn or cover a given revenue, return on capital employed. यहीं पे हमने जो ना sales at desired profit, all that हमने जो देखी, that is the one. Okay. Determination of profit to be obtained with increase or decrease in sales. Okay. Profit at desired sales again. Okay. Determination of comparative profitability of each product line, project or profit plan. ठीक है. When you have different products, आप सबका PV ratio and all those things you can compare it easily. Suggestion for shift in sales mix. Again, when you have more than one product like here, you can decide on which one to produce more, which one to reduce, so that there is an overall increase in profit. So that is determination of optimum sales volume. Maybe it helps us find out this as well. Okay. Evaluating the effect of reduction or increase in price. Okay. So इसमें ये क्या और price differentiation in different markets. So you see what you do is if I reduce price a bit, then how much I can sell. You find that out and based on that you do the comparison. Okay. ठीक है. फिर highlighting the impact of increase or decrease in fixed and variable cost on profit. ठीक है. ये तो हम देखते ही हैं. Correct. Inter-firm comparison भी किया जाता है. Same comparison आप जब when you do it for two different firms, it becomes an inter-firm comparison. Okay. ये आपके users हो गए कि आपको ये maximum आपको you need 4 points at the most. 4-5 point आपको याद रखने, आप अपने मन से भी लिख सकते हो. Okay. ऐसे limitations के भी I've just included the important points. ठीक है. फिर बाद में now we'll do some problems in the next session. Limitations I'll take you through. All costs cannot, limitations से all costs cannot be clearly segregated into fixed and variable. कुछ costs ऐसे होते हैं semi variable, कुछ तो segregate हो जाते हैं, but some costs it's very difficult, very time consuming to segregate it. The behavior of both costs and revenue is not entirely related to change in volume. Sometimes volume बढ़ गया क्योंकि the workforce was motivated that day and that's why it increased. Not everything is related to cost and revenue. So profit दूसरे भी factors से बढ़ सकते. Okay. Change in profit can happen because of good work or bad work by the other factors also. That costs and revenue patterns are not always linear. So जैसे linear है what it means is दो एक यूनिट का कॉस्ट 20 है, 2 यूनिट का कॉस्ट 40 है. The same linear relation हमेशा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं. Okay, that's what is this limitation. The linear relation might not be there always. The fixed costs are constant only within a limited range. ठीक है. उसके बाद they are liable to change over a long period. Now आपका एक गोडाउन का कैपेसिटी है, गोडाउन ठीक है 1000 यूनिट्स है, that's your fixed cost. लेकिन जब your production is going beyond 1000, you will have to hire another godown. So fixed cost आपको बदल गया वहाँ पे, right? So that is the point they are making here. Sales mix is not always clear. Sales mix तो is very dynamic.
company has to keep on changing it even quarter by quarter. It's based on situation, it's based on market situation, not an internal calculation. ठीक है, तो इसमें जैसे हो सकता है कि one sales mix is appearing most profitable, but physically market condition ऐसा है कि it's not feasible, हो नहीं सकता. Then you will have to go with what you can do. ठीक है, assumption that production and sales figures are identical and change. हाँ, इसमें जो है ना opening और closing stock का जो difference है उसको that is ignored in marginal costing. Okay, but there can be a huge difference in opening and closing stock जिससे ये change हो सकता है situation. Okay, right? So ये आपके these are the main limitations. जैसे मैंने आपको इसलिए बता दिया ये दोनों, इसको आपको जो है ना you have to just remember 4 or 5 points. ठीक है, ये सब लगे हाथों कर लेना चाहिए. अभी जैसे मैंने किया है, आप घर जाके इसको कर लो. 4-5 points आपका आ जाने चाहिए. So even if you do not do it again, you should know it. इस तरह से ये सब small चीजें हैं, इससे बहुत फायदा हो जाता है. ओके, एंड मोमेंट में ये सब छोटी मोटी थियरी हम करते नहीं. ओके, इतना टाइम नहीं रहता है और बहुत लोड रहता है, तो हम लोग सोचते हैं चलो ये तो आता है अपने को. ओके, वी थिंक दैट वी नो दिस ऑलरेडी. तो स्मॉलर थिंग्स जस्ट देख के आप 4-5 पॉइंट्स यहीं पे आप कर लो. ओके, चलो, तो देन अभी यू कैन ज्वाइन मी बैक एट 6. ठीक है, नाउ इट इज 5:59. नो सॉरी नॉट 6:10. 5:59 हो रहा है. 6:10 को आप लोग ज्वाइन बैक कर सकते हैं वो सेकेंड सेशन. 6:10. ओके, थैंक यू. सेम लिंक.